So hello everyone. So today I'm live on this channel to take your queries and maybe to help you in the final phase before the NEET PG exam. And I am sure many of you are now in the final phase of your revision, final phase of your covering up of your ground. So I thought I'll just get in and give you some quick tips. So people who are appearing for the NEET PG in the coming 2-3 days, the important things are, please look at your DVT IMR booklet, please look at your must know topics, and on the final day please give a grand test to get into the form. I think that those are the things that I wanted you to know. Let's see if we have somebody who wants, but I also want you to know that on the final day giving a grand test always helps, because if you are giving a grand test on the final day, you get into the form of doing questions and you are able to manage your time better. Okay. And second thing is, I also want you to know that it is always important to do 35 questions in every 30 minutes, because this paper will have 200 questions. Total time is around 3.5 hours. So 35 questions every 30 minutes is a good idea to do in this paper. And I would also suggest that if you have any queries, feel free to ask in the chat, or you want to join in, just send a request. I will add you in the video and I'll take your query directly. So maybe I can add the people who have sent me request. So if you have any queries, feel free to ask. I'm here to I'm here in this channel periodically to see the queries, to help you out. Let's see if I can directly answer your queries. I think Dr. Nitesh is there, but he's unable to connect. Okay. And also it's like yes, Shivam has asked a very good question, how many to attempt. So Shivam, what I would suggest is कि जब भी हम ये पेपर दे रहे होंगे तो दो तरह के क्वेश्चन है. एक तो जिसमें हम दो चॉइस रूल आउट कर पा रहे होंगे. So if I'm able to rule out two choices, we should be actually going ahead and doing it. जो दो चॉइस रूल आउट हो गई उसको करना पड़ेगा, यानी उतना एग्रेशन चाहिए पेपर के अंदर. Attempt more than 175 out of 200, because usually NEET PG is a doable paper. It's a very conceptual paper. So that's the idea. And I see some of you are saying कि सब भूल गया. बच्चे कुछ भी नहीं भूला है, ऐसा लग रहा है, भूले नहीं है, सब कुछ सबकॉन्शियस में है. I want you all to remember that, Atul and everybody who is thinking this, that although we feel consciously that we have forgotten, but actually it is in our background, it is in our say subconscious, and it comes out on the day of the exam. So trust your subconscious, trust your gut feeling on the day of the exam also. Okay. And I see Bacha is saying, sir, I am feeling guilty. Bhattacharya is saying, sir, I am feeling guilty about postponement. So and not studying along. So बच्चे अभी पीछे तो नहीं जा सकते ना, अब तो आगे ही देखना है ना. हाँ हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है सर. हाँ बच्चे बता, क्या क्या चल रहा है? Okay. And in the final 2 days DVT, yes, beta, I think that's a good idea that you're doing. Final 2 days DVT is a very good idea to revise. Must know topics are a good idea to revise. And also I want you to all to understand that what will happen is that in any exam, it is always a good idea to look at previous 2 to 3 year papers of that exam. So for NEET PG, I would always say that why not look at the the previous 2-3 years NEET PG papers. They are given in your eMedicos app as video solutions. You can cover them up. And Pandu Vani has asked, sir, what is the total number of competitors? There is no competition. It is between you and yourself. अपने आप को हराना है. I want you to give your best paper. अपना best exam देना है. So the idea is that although we cannot manage what we cannot always think about what others will be doing in the paper. We cannot control it. But if you do your best, you will have no regrets. And that is the mantra that I wanted you to have today. That it is okay. So let's see. Okay. And another question is 2022. You will have NEET PG. Ayush, Dr. Ayush. In 2022, you will have NEET PG in probably in the month of April, and in 2023 January you will have the next exam. So that is how it will happen.
हाँ बच्चे, क्या हाल है? गुड बढ़िया सर। आफ्टरनून। सर कैसा अभी चल रहा है? पर्टिकुलरली ये दिक्कत हो रही है, जैसे मैं जीटीज दे रहा हूँ अभी रेगुलरली। तो अपने जो ई मेडिकोज में जीटीज है उसमें आई एम सिक्योरिंग अराउंड 145 प्लस। अच्छा आ और रहा है? बट समटाइम्स आई गिव अदर जीटीज, तो एकदम से मतलब दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म पे दिए कभी 135 से भी नीचे हो जाते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है। तो एक टाइप में यूरोफोरिया हो जाता है, दूसरे टाइम पे दूसरे जीटी पे आई एम डिप्रेस्ड कि सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं हो सकता। हाउ टू तो बात एनालाइज दैट, हाउ नहीं, टू दैट? कोई नहीं बच्चे, लेकिन पेपर हमारे पैटर्न का आना है, चिंता ना करो। मेरा ये कहना है कि उसको ना आप जो मतलब ये मेरा ये मानना है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन जो होगा ना हमेशा एग्जाम के हिसाब से भी होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर एक पेपर टफ आता है तो उसमें नंबर ऑफ करेक्ट्स आपके कम हो जाते हैं, लेकिन टॉपर के भी कम हो जाते हैं। तो इसको आप बहुत ज्यादा लोड ना लें। अपना रैंक्स को और स्कोर को दोनों को हमें टाइट्रेट करके देखते रहना चाहिए कि मेरा रैंक कैसे आ रहा है और मेरा नंबर ऑफ करेक्ट कैसे आ रहा है ना। लेकिन अभी कैसे ना बच्चे, देख अब आखिरी 2-3 दिन के अंदर ना स्पेकुलेशंस करने से स्ट्रेस बनाएगा। मेरा मेरा कहना यस, है अब आखिरी में हम बहुत स्पेकुलेट करके क्या करेंगे? अब तो पेपर देख ही लेते हैं क्या होगा। ठीक है सही ना? बात है सर। हाँ, तो अभी यस थोड़ा सा सर। रिलैक्स हो जा। अभी आखिरी में ना द एंटायर आइडिया इज कि नाउ इन द लास्ट 2 days वी हैव टू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। अब तो ये सोच के जीतने के लिए जा रहे हैं। अभी पहले यस सर, जीते बिल्कुल। नहीं जीते, पहले ग्रैंड टेस्ट में कम आए ज्यादा है, कोई बात नहीं। अब की बार बेस्ट होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है? थैंक यू वेरी मच। दिस पेपर शुड बी बेटर देन एनी ग्रैंड टेस्ट दैट यू हैव गिवन एनी बिफोर। मतलब इस बार की इट विल बी परफॉर्मेंस सर। पहले से सबसे बढ़िया होनी चाहिए। होगी सर, ये है ना? वाली होगी। जिंदगी का बेस्ट मैच। यस सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक थैंक बेटा, यू सर। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक गॉड यू ब्लेस सर। यू बेटा। ओके, एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि सर नेक्स्ट का एग्जाम नीट से मुश्किल होगा। मुश्किल मुझे लगता है इफ आई डिफाइन डिफिकल्टी एज कि नेक्स्ट के एग्जाम में आई फील द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी मोर इन द स्टेप 1, देयर विल बी अ स्टेप 2 आल्सो व्हिच विल बी प्रैक्टिकल, एंड द पेपर विल बी मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड। तो मुझे लगता है थोड़ा तो मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा एग्जॉस्टिव वर्कअप आपको करना पड़ेगा। आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े से क्वेश्चन याद करके चले जाओ। So it will require a lot of understanding part. That is what the why of the changes that are happening here. Okay. Anybody who wants to go live and ask a question, please feel free to send a request. So Rajshekhar, during the exam, I want you to do 35 questions every 30 minutes, and I want you to start giving a grand test a day before. एक दिन पहले ही ग्रैंड टेस्ट देना शुरू कर देना ताकि पहले क्वेश्चन से ही स्पीड अच्छा हो. Okay. And usually in NEET PG, we have a small number of one liners, more number of clinical questions, but this time because they have reduced the number of questions, I feel one liners will be very less. Panduvani beta, you have asked this question, and one bacha has asked, what about minus marking, and how do we tackle that? So Asma, it is the entire idea in the paper is that by now, by giving grand test, by giving mock test, you should have covered up the skill that you need. In the exam, you don't think too much about negative marking. You think about, am I able to rule out two choices? If you're able to rule out two choices, you should go ahead and do that paper question. Okay. Yes, and a lot of students have joined us for the NEET PG TND. Yes, beta, I will explain to you. One set of NEET PG TND is ending at this NEET, and we will conduct another set of TND, which will be a separate set of questions, and you will get that also if you have enrolled for that duration. So, because we know that the next NEET PG will be in April, so another cycle of NEET PG TND will happen in the same course. Okay. And bacha has asked how to reduce negatives by repeated revisions and by being careful on the day of the exam. I will explain to you. On the day of the exam, do not overthink or underthink. Overthink मतलब एक क्वेश्चन टीचर ने क्लास में बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर डैम्स नोट्स, then go ahead and do it with your gut feeling. Don't overthink into it. And if it is a question where you need to rule out things, you need to properly think, don't underthink. So be silly mistakes happen when you overthink or underthink, so that is important. And how to manage the paper, Shuprit, in 3 hours is by doing 35 questions in every 30 minutes. 35 questions should be done in every 30 minutes. Okay. And let's see now. I think we have a
lot of students here who want to be live. Okay. Yes, Vishnu, I think must know topics and DVT and a single test should be the most important thing in the last 2.5 days. हाँ बच्चे क्या हाल है? Hi sir, good afternoon. It's going good, sir. Actually, just I wanted to have a suggestion that I had been preparing very well, and in last minutes I have been getting a lot of confusion about what to do, what not to do. And if I take up any class notes, I will sit with the class notes and I'll be reading everything. That's the only thing I have been. But in the last 2 days, last 2 days रह गए ना अभी तो. Yes, sir. Last 2 days, it is very difficult to do class notes because then you can only see one subject. But Yes, in sir. the last 2 days, I want you to kind of flip through multiple subjects so that you feel more confident. So that Yes, is sir. where I would suggest look through DVT. In DVT, Yes. you have that booklet called as IMR. You can Yes, just sir. look through it. That will give you an overview of entire human systems. So you Yes. feel more confident in the exam. Sure, sir. What about the must know topics, sir? If you do Must know topics is also is a good resource. So what you have done so far, you can plan accordingly. If you have seen DVT videos already, then only I see have the seen notes. DVT twice, sir. Okay, then see only the notes. Sure, sir. So that you, but important thing is that you should feel confident in the day of the exam. Although I want you to smile once, relax. Okay, I want you to know that already whatever you know is in your mind. Whatever you are going to do in the final 2 days is just to make you feel more confident. Understand ना? अभी जो पढ़ना है वो पढ़ चुके हैं, लेकिन you have to feel more happy about yourself कि मैं आखिरी दिन में बढ़िया से revise करके आया हूँ. So that is where it is important to look at DVT and must know topics so that you know कि मैंने I have seen all the important parts of every subject in the final 2 days. Sure. Best of luck, beta. Best of luck. Thank you, sir. Okay, and I see. Okay. Okay, some bacha has asked when will be the next DVT. So next DVT, DAMS DVT is a revision program that we conduct every year. Usually we do it 3 months before the final exam. So assuming the NEET PG to be in April, we will do DVT this year in December or in January first week or December last week, depending on the date of the exam. That is the date, and this time we are bringing up again. Every year we outdo ourselves in the quality of DVT. So this year we are planning a very, very highly clinically integrated DVT, which I'm sure you will enjoy. And Bhattacharya has asked how many questions to attempt. I think 175 plus is a safe attempt ratio in this exam. After the exam also, I will do an analysis and tell you based on the difficulty level. Okay. एक बच्चा कह रहा है कि सर how much time preparation is needed for next. So for next, I would suggest that if you're right now in second prof, it is ideal time to start thinking about next, because next will happen 1 year early. Next will happen in the after final prof. So you need to start early. You need to start in your second year. Okay. And I also want everybody to know that at this point in life where you are, आप पढ़ चुके हैं. I am reminding you that you've already studied. You have it in your subconscious. बार बार लगेगा भूल गया है. Every time you will think I don't remember, but actually it is there. It is there as skill, as understanding, hardwired in your brain, and it will come out on the day of the exam. You will be able to do well. Don't feel demotivated. Don't feel depressed. If you have anybody who is talking negative things to you at this point, ignore करेंगे. अभी आखिरी 2 दिन में कोई एग्जाम टेस्ट करने के लिए मत देना. लास्ट दिन में एक ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दे देना. उसमें रैंक देखने के लिए नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे. अभी अपने आप को जज मत करो, अपने आप को प्रेशर में मत लो. अभी सोचो कि किसी तरह से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करके you will give the best exam of your life. The important thing is अपना बेस्ट होना चाहिए. But let me explain it to you further that you might have given grand test, mock test in the last 1.5 year because of the delayed papers. But at least now when you come back after this exam, you should feel कि ये मेरा बेस्ट एग्जाम हुआ है. मेरा मतलब जो मैं अब तक कर सकता था उससे बढ़िया मैंने किया है ना. वैसा करना है. अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना. एक सोचना है कि मैंने एक अपना बेहतरीन एग्जाम देना जिसके बाद मुझे रिग्रेट ना हो. Result जो मर्जी आए, that is important. Okay, and this is the time where we need to focus more on the exam, less on the outcome.
फॉरगेट अबाउट द आउटकम राइट नाउ। अभी आउटकम मत सोचो कि सर मेडिसिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब छोड़ते हैं अभी। अभी 2 दिन है ना, 2 दिन बढ़िया सा पेपर देने की सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो एक मौका मुझे मिला है टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, मैं उस मौके में अपना बेस्ट कर पाऊं, दैट इज इंपॉर्टेंट। Okay, and let's see if somebody wants to be in the and ask a question live. Okay, uh, and another line that you must have seen a lot of toppers keep saying in every interview is, give your DAMS grand test as if you are giving the final exam, give your final exam as if you are giving a grand test, so that the mindset is you need a calm mind on the day of the exam, so that there are no silly mistakes happening for you in the exam. Okay, and Sarayu Reddy has okay, let's see, some bacha has joined. Okay, so Sarayu Reddy has asked about, sir, when should I start preparing for next? Second prof is the right time. In second prof in DAMS we run a course called as pre-foundation, where we cover the first second years with clinical the integration, and in third year onwards we recommend that you do the integrated regular course that we are doing now. Okay, Sarayu, and you can actually inbox on this channel. I will reply in detail to you as well, Sarayu, and anybody who has a query, I'll try to answer personally today if you send on this channel any inbox. Shivam is joining us. Shivam, okay. What about INIC? Yes, हाँ शिवम, क्या हाल है बेटा? बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया बच्चे, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया सर, बढ़िया सर। ठीक, पढ़ाई ठीक चल सर रही है? नेक्स्ट सर मैं तो सर मैं फॉरेन में हूँ सर, वहीं से अभी चल रही है, अभी तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं सर। ऑफलाइन 15 अक्टूबर से सर क्लासेस रन करेंगे। तो सर ये पूछना सर कि जो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 होने वाला है सर, हम लोग के टाइम आता है सर, मैं 3rd ईयर में हूँ। तो सर जो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 होने वाला है, तो सर इसमें मतलब कि जो FMG का लेवल रहेगा सर, कि इसमें और कुछ सर इंक्रीज, जो क्वेश्चंस के पैटर्न सर इंक्रीज करेंगे सर? इंक्रीज हो जाएगा बेटा, क्योंकि ना अभी FMG का जो एग्जाम हो रहा है ना बेटा, इसमें अगर हम देखें पिछले 4 साल का मैं रिव्यू करूं तो 60% 50 से 60% पेपर वन लाइनर आ रहा है और 50% क्लिनिकल के लगभग रहता है, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो। लेकिन जब नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट 100% क्लिनिकल होगा पेपर, पूरा क्लिनिकल विनियट से ज्यादा होगा, वन लाइनर्स कम हो जाएंगे उसके अंदर। और दूसरा एक और चीज जो मैं चाहता हूँ बच्चे आपको बताओ, अभी प्रैक्टिकल नहीं होता आपका पेपर, लेकिन नेक्स्ट आने के बाद जो उसका पार्ट 2 है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो पार्ट 1 होगा MCQ, पार्ट 2 प्रैक्टिकल। और ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और इंडियन ग्रेजुएट में फर्क हो कि इंडियन ग्रेजुएट को नेक्स्ट देना होगा, फॉरेन ग्रेजुएट को नेक्स्ट के साथ एक एक्स्ट्रा पेपर भी देना हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा, इस बारे में बात भी चल रही थी कि बेसिक साइंसेस के ऊपर एक्स्ट्रा पेपर भी ले सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बट घबराना नहीं है बेटा, पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप मेरा ये भी आपको कहना था कि कई बार आप लोग ऐसा, कई बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं कि सर अब मुश्किल हो जाएगा। देख, हमेशा जो मुश्किल और आसान है रिलेटिव टर्म्स है। जो बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करा होता है उसको हमेशा आसान लगता है पेपर, है ना। तो अभी से आप 3rd ईयर में बहुत टाइम है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यस सर, है ना। और हमने अभी जो, मेरा एक और भी सजेशन है आपको कि ज्यादातर जो बच्चा इंडिया के अंदर जो बच्चा नीट के लिए पढ़ता है, वो जो डैम्स का रेगुलर कोर्स में पढ़ता है, आज हमने वही डैम्स का रेगुलर कोर्स ई-मेडिकोस ऐप के ऊपर हमने अल्टीमेट लाइव कोर्स की तरह हम उसको लेके आ गए, जिसको आप कहीं से बैठ के लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू सर। ओके, और एक बच्चे ने पूछा हुआ है कि व्हाट अबाउट INI-CT, तो मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ। INI-CT का एग्जाम जो है हमारा अभी नवंबर में INI-CT का एग्जाम होगा, और उसके बाद अगले साल मिड ईयर में भी INI-CT का एग्जाम होगा। लेकिन नेक्स्ट आने के बाद आई फील INI-CT विल बी मर्ज्ड विद नेक्स्ट एग्जाम। ओके ओके, एंड एक बच्चे ने पूछा, सर INI-CT TND ज्वाइन करें कि NEET-PG TND ज्वाइन करें? सो माय आंसर इज, if you are preparing for NEET and INI-CT both, you should join NEET-PG TND, because in that we will cover NEET-PG as well as INI-CT discussion. But if you are specifically targeting INI-CT, you are in a top bracket, you are always getting good ranks, then INI-CT TND
In that, we cover only the most high yield topics for INI CET. It's a specially designed course for toppers, people who are wanting to get into AIIMS exam, PGI and CHIPMER. Otherwise, if you have to choose between the two, NEET PG TND targeting 2022 is available on the eMedicos app. That is the ideal course for to be joined as a test and discussion. एक बच्चे ने पूछा है when will we start offline classes in Delhi? Yesterday only the Deputy Commissioner of Delhi has issued an order. We will be opening the classes very soon now. So there is no, they have allowed the classes to be opened in Delhi. This is good news. तो अभी दिल्ली की क्लासेस हम शुरू कर देंगे. थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उन्होंने एडवाइस किए हुए हैं, लेकिन अब दिल्ली के अंदर हर तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को अलाउ कर दिया गया है, विच इज गुड न्यूज फॉर एवरीबडी. ओके, और नेक्स्ट एंड 3 साल के बारे में क्या कंफ्यूजन है? ओके, सो आई थिंक वन मोर क्वेश्चन आई कैन टेक हियर इज दैट नेक्स्ट विल द स्कोर दैट यू विल गेट इन नेक्स्ट पार्ट 1 विल बी वैलिड फॉर 3 years. नाउ वैलिडिटी के दो मतलब हैं. एक के उस वैलिड पीरियड के अंदर आपका स्कोर लॉक हो जाएगा, या दूसरा मतलब है कि वो बार बार अलाउ करेंगे और आप बेस्ट ऑफ द 2 स्कोर ले पाओगे. मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि आप पेपर बार बार दे पाएंगे, ऐसा लगता है अभी की बात को सोचने से, और आपके दोनों स्कोर वैलिड होंगे, जो ज्यादा होगा आप यूज कर पाएंगे. लेकिन USMLE के अंदर जो स्कोर होता है लॉक हो जाता है, दोबारा पेपर नहीं दे पाते. तो अभी अगले साल में इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन आएगी. The government has already told us that in 2022 they will give a blueprint of how next will be conducted and what is the purpose. But one thing they have said is that the score will be valid for 3 years. What about postponement? Abhi, I think it is unlikely that they will postpone this year's exam. क्योंकि अब तो 2 दिन बाद पेपर ही आ गया, अब क्या पोस्टपोन करना उसको. और अगर अभी पोस्टपोन करते हैं तो ये साल का पूरा एडमिशन ही खराब हो जाता है. अनलाइकली लगता है मुझे कि पोस्टपोन होगा. आप तैयारी रखिए अपनी पढ़ाई की. अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आज आई थिंक नीट यूजी की पोस्टपोनमेंट को मना कर दिया उन्होंने कि पेपर होना है तो पेपर विल बी देयर. NEET 2022, okay Devedi, I got your question wrong. शिवम, NEET 2022 probably will be in April. उसके आगे नहीं जा सकते वो, क्योंकि अगर जनवरी में अगली बार नेक्स्ट करना है तो अप्रैल में नीट करना ही पड़ेगा उनको. Upcoming INI Prajakta will be in April, and NEET PG 2022 will be in upcoming INI CET will be in November, then in June, and अगला NEET PG अप्रैल में होगा. हाय डॉक्टर तुषार, क्या हाल है? हाय सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? मस्त. मैंने कहा बच्चों को एक आपकी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक हो जाए. हाँ जी सर, बिल्कुल. बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है एग्जाम में. बस 2-3 दिन रह गए हैं और जो पढ़ा है वो याद हो नहीं रहा है. जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ नहीं रहा है. सर कैसे होगा सर? तो ये जो सवाल इस वक्त सब लोग जो पूछ रहे हैं, ये हमने भी पूछे थे. इसी इंसान से ही पूछे थे जिससे आप लोग पूछ रहे हो. तो मैंने खुद डॉक्टर सुमीर से यही सब सवाल पूछे थे कि सर कैसे होगा सर, बताओ सर. तो यू गॉट द बेस्ट मैन टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. बट आप लोगों को मैं तो सिर्फ 1 ही मिनट के लिए ज्वाइन किया, इसीलिए कि भाई मैं आप लोगों को बता सकूं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो. अपने पे, अपनी तैयारी पे, अपने प्लान पे, अपनी एफर्ट पे, मेहनत पे विश्वास रखना. बस एक ही चीज है, जस्ट हैव फेथ इन योर एंटायर work that you have done, in the entire process that you have followed, in the entire efforts that you have made. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सच्चाई से मेहनत करी है और अगर आपने हर चीज पे आपने एक जेन्युइन एफर्ट किया है और अगर आप में कमिटमेंट है तो सब कुछ हो जाएगा. बस रुइन मत कर देना आखिरी के 3 दिनों में, 4 दिनों में चीजों को रुइन मत कर देना, सिर्फ इसलिए कि एंजाइटी जो है. अरे ये तो डॉक्टर दीप्ति भी ज्वाइन कर गई. Hi everyone. So I also thought this is a great time to join with the 2 best people that I know. So I will just say all the very best to all our dear students. Dr. तुषार ने बिल्कुल सही बात बोली. आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, अब सिर्फ भरोसा रखना है. Have faith on what you have done. और हर तरह के लोग हैं, बिल्कुल लोड नहीं लेना है. There are people who will slog in the last hours. तो कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो दबा के घंटे घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़कर आराम से बैठे हैं और अब तसल्ली रखे हैं, अपने
उनको प्रेपरेशन पे बहुत भरोसा है. सो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर देयर. प्लीज डोंट टेक लोड. एक दूसरे को देखकर बिल्कुल टेंशन नहीं करना है. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. डॉक्टर सुमेर ऐसे थे जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते थे. मैं ऐसी थी जो लास्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी. डॉक्टर तुषार, आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं? किसी भी मोमेंट पे नहीं पढ़ता था. तो देखो ये हम लोग तीनों एग्जाम्पल हैं कि एक फॉर्मूला हर बच्चे पे लागू नहीं होता. सो नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू हैव बीन, आप लोग सारे एक्सेल करोगे. डॉक्टर सुमेर अपनी ब्रांच में एक्सेल कर रहे हैं, डॉक्टर तुषार अपनी ब्रांच में एक्सेल कर रहे हैं, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन लकी एज वेल. सो आई एम श्योर कि वो that God's blessings are with each one of you. So it doesn't matter कि आप कौन सी कैटेगरी के बच्चे हो. Just have faith. With whatever you have done, you will be able to excel. All right. So all the very best. So thank you, Dr. Sameer and Dr. Tushan, for letting me barge in. Thank you. And wish you the best. Wish Thank the you. best to all the students. Right. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. तो बस यही, अब मैं भी यही बात कर रहा था कि आप लोग बस इस आखिरी के इन 2-3 दिनों को प्लीज खराब मत करिएगा. आप पढ़ते रहिए. डोंट लूज फेथ इन योरसेल्फ. और बहुत ज्यादा ना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है विद योरसेल्फ, विद पीपल अराउंड यू. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कल से कि मेरे को घर पे इरिटेशन हो रही है, मैं कहाँ चला जाऊं, मैं लाइब्रेरी में पढ़ लूं, मैं यहाँ पढ़ लूं. कुछ नहीं है. जो आपने इतने महीनों से पढ़ा है, दैट इज प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ योर स्पाइनल रिफ्लेक्स नाउ. वो आज आपसे कोई नहीं छीन सकता. आप लोगों को जो एक डर है ना, जो आपको बेसिकली आप लोगों को जो हुआ है ना, मैं आई वाज टॉकिंग टू समवन इन द मॉर्निंग, तो ऐसे कुछ बात होने लगी, तो बोले कि जेन जी क्या होता है. तो बोले कि पहले होता था जेन एक्स, जनरेशन एक्स, जो हमारे बाद आई. अब उसके बाद आ गई है जनरेशन जी. सो दैट यू पीपल आर नाउ जेन जी. सो जेन जी को एक ही चीज हो रही है, वो रही है फोमो. तो आप लोग प्लीज फोमो में मत जाइए. देयर शुड नॉट बी एनी फेयर ऑफ मिसिंग आउट. आप लोग अपने नोट्स, अपने ग्रैंड टेस्ट, अपने जो आखिरी में आपने जो सोचा हुआ था कि आप डीवीटी रिवाइज करेंगे या लास्ट माइल पढ़ेंगे या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स जो हम लोगों ने आपको कवर कराया है, आप बस उनको चुपचाप आराम से शांति से देखते हुए चलिए. ये मत सोचिए कि माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हुए कि मेरी पैथोलॉजी छूट रही है और पैथोलॉजी पढ़ते हुए कि मेरी ऑर्थोपेडिक्स छूट रही है. कुछ नहीं होगा ऐसा. Have faith in yourself. That is probably the most important thing right now. Don't get irritated. 1 minute of irritation will probably ruin another 5 to 10 minutes. Because आप 1 मिनट irritate होंगे अपने आप से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली रिलेटिव से, फिर 10 मिनट आप रिपेंड करेंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ. याद रखना, इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, हालात अच्छे बुरे होते हैं. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक ही चीज सोचो. मैं तुम्हारी जगह था तो मैं एक ही चीज सोच रहा था आखिरी के 1 हफ्ते में कि एग्जाम खत्म होने के बाद क्या करूंगा. तो बस ये सोचो कि जिस वक्त, जिस लम्हे में मेरा एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद मैंने शेरशाह देखनी है, या मैंने घूमने जाना है, या मैंने हिमाचल जाना है, या मैंने केरला जाना है, मैंने जहां भी जाना है. केरला तो खैर अभी नहीं जा सकते, कोविड है वहां. तो बेसिकली आपको वो सोचना पड़ेगा. थिंक ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल. बस वो सोच के सो रात को. आप लोग इन दिनों में नींद का भी आप लोगों का बहुत मसला चल रहा है. आप लोगों को 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं सोने में. कोई ज़ोलपेडेम खा रहा है, और ये सब मत करो यार. सिर्फ अच्छी खूबसूरत चीजें सोचो कि एग्जाम के बाद मैं ये करूंगा, मैं उससे मिलूंगा. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. तो वो सोचो, वो सब सोचो. अच्छी चीजें सोच के सोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा. जल्दी नींद आएगी, जल्दी उठोगे, और मेहनत करोगे तो टेंशन नहीं होगी. ठीक है, बस वो सब चीजें सोचो. बाकी ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. और बिल्कुल इसी मूड के साथ आई थिंक वी विल नाउ कॉल इट अ डे. एंड आई वांट यू टू से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आपके एक सेकंड बीपी और मेरे हो रहा है. आपके जो लास्ट जो कुछ भी ये 2 दिन है, इसमें दी ओनली थिंग दैट विल मैटर इज योर कॉन्फिडेंस. अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है. अभी तक जो हुआ कि सर मेरे 130 करेक्ट हो रहे हैं, 120 करेक्ट हो रहे हैं, 140 हो रहे हैं, कोई बात नहीं. इस बार ज्यादा करेंगे. गिव द बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. अपना पॉजिटिव रहेंगे. जैसे डॉक्टर तुषार ने बताया, डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि अभी अपना ये सोचते हैं यार ये एग्जाम में क्या ही बिगड़ जाएगा. मेरा एक ये तरीका है, और मैं चाहता हूँ आप सबको बोलना कि कई बार जब भी मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल टाइम आ गया, तो मैं सोचता हूँ क्या छिन जाएगा, आखिर क्या ही चला जाएगा, अगर कुछ मतलब क्या हो जाएगा. तो उस तरह से मैं अपने आप को तैयार कर लेता हूँ कि क्या छिन जाएगा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी.
एक अच्छा पेपर देते हैं, देखी जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा आउटकम के बारे में सोचने से कई बार हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। मैं कह रहा हूँ आउटकम छोड़ते हैं, कहते हैं देखी जाएगी, करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं और देखी जाएगी। और इसी नोट के साथ वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना टाइम अपने आप लाएंगे एंड और कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, औरों को मत देखो। डॉक्टर तुषार हमेशा ये कहते हैं आपको कि आप भीड़ नहीं है, आपके अंदर एक जमाना है। और मैं वही बात आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आपकी अपने आप से। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट एग्जाम, come back with no regrets, and we will interview you on this channel. I wish you all the best. God bless everybody. ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन। खुद से जीतने की ही जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। बस फोड़ डालो। ऑल द बेस्ट। फोड़ डालेंगे और अपना टाइम लेके आएंगे। God bless everybody. Bye. बाय बाय सर, बाय।